ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। पार्सल जरिए शरीर के कट्टे हिस्से भेजण वाले व्यक्ति वालों साल 2007 में दी एक इंटरव्यू सामने आई है। इस वीडियो में लूका रोको मैग्नोटो ने अपने पेशे बारे कई अजिहियां गल्लां कीतियां ने जिहड़ियां उसकी निजी जिंदगी दियां ने। मन्निया जा रहा है कि यह शक्की व्यक्ति कैनेडा छड्ड के हुण भज चुक्या है, जिस करके कैनेडा की पुलिस ने इस मामले च इंटरपोल की मदद भी मंगी है। It's very difficult, because when I meet somebody, I usually only date people who are in the profession. Like I date, the strippers. I date like other adult film stars, Right. other escorts, and it is very difficult dating because nobody else understands like what I have to go through, and plus when I'm with somebody, it's like. Am I with a client here, or am I with somebody who I'm caring about it? Like my feelings are all right. Though you find those lines blur between your personal life and your professional life. Yeah, that's true. It does blur, but I don't really. I have luck in the sex department, but not the love department. अमेरिकी विदेश मंत्री हिलैरी क्लिंटन ने कहा कि जेकर सीरिया मसले ते रशिया कौमांतरी भाईचारे नाल सहयोग करदा है तां अमेरिका भी रशिया नाल सहयोग जरूर करेगा। नॉर्वे के ओस्लो च एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान बोलदे उन्होंने कहा कि सीरिया च मौजूदा हालात नूं सुधारन लई रशिया नूं सियासी हल विच सहयोग करना चाहिए है। उन्होंने कहा कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन नूं इस मामले संबंधी सोचना चाहिए तां जो सीरिया च हो रहे खून खराबे नूं जल्दी बंद किया जा सके। Repeat the appeal that I have made to Russia because their position of claiming not to take a position is certainly viewed in the Security Council in Damascus and elsewhere as a position supporting the continuity of the Assad regime. And if Russia is prepared, as President Putin's remark seems to suggest, to work with the international community to come together to plan a political transition, we will certainly be ready to cooperate. I will be meeting in Istanbul toward the end of next week with representatives of a lot of the regional countries that are deeply concerned about what's happening. So if Russia is prepared to help us implement all of the 6 parts of Kofi Annan's plan, we are prepared to work with them to do so. यूनाइटेड नेशनस के सैक्रटरी जनरल बान की मून ने कौमांतरी भाईचारे नूं अपील की है कि सीरिया च होर नुकसान ना होण देण लई तुरंत कदम चुके जाण। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल च उन्होंने कहा कि जेकर कौमांतरी भाईचारा उन्हां दीआं कोशिशां विच मदद करदा है तां सीरिया समस्या दा हल सियासी तरीके नाल लभ्या जा सकदा है। I believe that if the international community knows more, it will be better positioned to advance our efforts to find a durable political solution, a solution that holds the bloodshed and safeguards the lives and interests of all Syrians. If the escalating violence shows anything, it is that we urgently need bolder steps. The Annan Plan offers a realistic and achievable roadmap. To succeed, it is essential that the united international community bring its full influence to bear. Above all, it is incumbent on government of Syria and its leadership to act in line with their commitments to the Joint Special Envoy, as well as their moral and legal obligations under international human rights law. यूनाइटेड नेशनस की मनुखी हकों की राखी करने वाली कौंसल ने सीरिया के हौला शहर में की गई कतलोगारत की जांच लिए सबूत इकट्ठे करने की गल कही है। कौंसल ने कहा कि यूनाइटेड नेशनस नूं इस कतलेआम की जांच करनी चाहिए है तो इस पिछे तत्थां नूं सामने लैके आना चाहिए है। जिनेवा च इस संबंधी एमरजेंसी सैशन बुलाया गया जिस 47 मैंबर देशों में 41 ने इस कतलेआम के हक में वोट पाई, जो कि 3 मुल्कों ने इसका विरोध किया, जिस चाइना तो रशिया भी शामिल ने। Je crois que là, le régime de Damas ne peut pas ne pas entendre la voix unie de la communauté internationale qui lui demande de respecter ses obligations et d'arrêter de tuer et de ne pas respecter les droits de l'homme comme il le fait. We're very pleased with the significant majority in favor of this resolution, particularly because it was a strong condemnatory text. It had many new elements.
It had the Kofi Annan plan. It was reinforced. It also asked for a briefing by Kofi Annan, and it called for a very urgent special investigation into the massacre that took place last weekend. सीरिया ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਹੌਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਬਸ਼ਰ ਅਲ ਅਸਦ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਬਾਨ ਕੀ ਮੂਨ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। And the UN's silence is killing them because every day they don't do something, more people are dying. He's using that as an excuse and a weapon against his people. He's like, the UN can't harm me, can't do anything to me, so why should I stop? We got to talk to Ban Ki-moon, actually, or United Nations. You have to do something to Syria people. You have to free them soon, very soon. You have to free them Syrian people from this regime. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਵਿਲੀਅਮ ਹੇਗ ਨੇ ਇਸਤਾਂਬੁਲ 'ਚ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੀਰੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲਾਤ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਰੀਆ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਖੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੀਰੀਆ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪੀਸ ਅੰਬੈਸਡਰ ਕੋਫੀ ਅਨਾਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। उन्होंने कहा कि जेकर कोफी अनान की शांति योजना आउंदियां कुछ हफ्ते तक फेल हुंदी है तो सीरिया समस्या के हल लई सिक्योरिटी काउंसिल नूं कोशिश करनी होगी। I've met here in Istanbul the Syrian National Council representatives and also other opposition groups in Syria, and I've also had a good discussion about the terrible situation in Syria with the United Nations Secretary General Ban Ki-moon. I think both the Secretary General and I and the opposition in Syria think that Syria is on the edge. It is on the edge of a catastrophic situation, if we can imagine one even worse than the current situation. Clearly, we're supporting very strongly a United Nations process led by Kofi Annan, backed by the UN Secretary General, and all the Security Council members support that process. If it fails in the coming weeks, then we will need to return to the Security Council. And we don't know how the situation in Syria will develop, so I don't think we can rule anything out in the coming months. सीरिया मुद्दे ते यूनाइटेड नेशनस के शांति दूत कोफी अन्नान सीरिया विच पैदा हुंदे ताज़ा हिंसक हालात कारण काफ़ी निराश ने। लेबनान की राजधानी बैरूत विच उन्होंने कहा कि यूनाइटेड नेशनस की शांति योजना तहत सीरिया च किया जा रहा काम काफ़ी सुस्त चाले चल रहा है। लेबनान के विदेश मंत्री नाजिब मिकाती नाल गलबात करदे उन्होंने कहा कि सीरिया मुद्दे नूं हल करन लई कौमांतरी भाईचारे नूं अगे आउणा होएगा तां जो सीरिया विच गृह युद्ध के हालात नूं काबू विच कीता जा सके। We are all frustrated by the violence, by the killings. So am I. I think perhaps I'm more frustrated than most of you because I'm in the thick of things and would really want to see things move much faster than it has done. When you are dealing with these sort of issues, it's not a simple issue of drawing up red lines and moving on. The council and the countries involved will have to keep working together to find a solution. If it's not this proposal on the table, there could be something else. I'm not one of those who believes there's only one way of solving the problem. There could be other ways. And if other proposals are on the table, I'm sure the council will look at it, and I'll be the first to say, bravo, let's move. We did discuss the issue of the kidnapped Lebanese and also both groups. There were also some who were taken in the north, and the UN will do whatever we can to help. I send my deep condolence to the families who are waiting for these people to be returned, and I hope every effort will be made to obtain their release. खबरां जे होर भी ने पर थे रुक रहे हैं छोटे जे ब्रेक ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।